Hello students, so let's start with today's class. So in the previous class we have discussed about structure of DNA in detail and the model Watson and Crick model. Now as we have already discussed about that the DNA is genetic material, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. What was the reason for studying the DNA as genetic material? Though we are completely aware of this thing that DNA is a genetic material, but is this only the thing that DNA is genetic material, but what is the purpose of having this genetic material in the cell? Okay, so for that there is a central dogma of molecular biology. We have a central dogma of molecular biology. अब तक हमें ये सब क्लियर हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उस डीएनए का रोल क्या है सेल के अंदर, वो एज अ जेनेटिक मटेरियल किस तरह से वर्क करता है. फॉर दैट वी हैव टू स्टडी द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. व्हाट डज इट मीन? सेंट्रल डोगमा मीन्स you can see this structure, this thing which I have written here, RNA, DNA to RNA, RNA to proteins. When we have studied about DNA, I told you that there are two types of nucleic acids, deoxyribonucleic acid, that is DNA, and second was ribonucleic acid, that is RNA. तो DNA के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बट RNA के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ओके, सो RNA इज ऑल्सो अ जेनेटिक मटीरियल बट इन सम वायरसेस ओनली. DNA सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है. RNA कुछ वायरस में ही कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है. ठीक है, तो फॉर वन थिंग इज दिस दैट RNA कैन ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. सेकेंड थिंग इज RNA also takes part in this central dogma. Means as I told you, genetic material means कोई भी चीज़ अगर genetic material की तरह work कर रही है तो उसमें हमने जब characteristic feature study किए थे कि if a thing is a genetic material, what should be the characteristic feature of that thing. ठीक है, तो DNA जो genetic material है उसमें हमने एक last point study किया था कि it should able to express its information. ठीक है, जैसे अगर DNA genetic material है और इसका मतलब वो जितने भी बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने पड़ते हैं, और प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि सेंट्रल डोगमा में शो किए गए हैं. ओके, सो DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन्स. सो DNA डायरेक्टली कैन नॉट प्रिपेयर प्रोटीन्स. इट हैज़ टू फर्स्ट कन्वर्ट्स इट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ RNA, देन RNA विल further form the protein, and these processes they have a specific names, that is DNA to RNA. The synthesis of RNA from DNA is called transcription. It is not actually synthesis, but when the information, the coded information is transferred from DNA to RNA, then this process is called transcription. And when this coded information is changed in the form of proteins, then it is called translation. So DNA to RNA is transcription and RNA to protein is ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन नॉर्मली भी आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, व्हेन इंग्लिश वर्ड सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी और हिंदी इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, सो दैट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. सिमिलरली DNA also has its own language to form a specific protein. For example, if we talk about a specific characteristic, for example our eye color, if we have black color eye, it means that the black color is provided by a specific protein, and that protein is present in our body which gives black color to our body, and that protein will be synthesized by a specific gene present over the DNA, and that gene will produce that protein in the form of coded information which is called codon. क्योंकि हम अभी पूरा डिटेल में जब स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस को, then we will find the codon information, how the coded information is there on the DNA, and how this information is transferred to RNA and then RNA to proteins. So these two processes we are going to study, transcription and translation. Before that I have shown here the circular structure, that is the replication. Here I have written replication. Replication means replica बनाना, अपना बिल्कुल exact copy बनाना. ठीक है, because you know that DNA, मैंने आपको बोला जेनेटिक मटेरियल, जब हमने करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था उस टाइम मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था दैट इफ़ अ थिंग इज़ अ जेनेटिक मटेरियल इट शुड रेप्लिकेट इटसेल्फ, बिकॉज वेन एवर द सेल फॉर्म्स the new cell, at that time the information has to be transferred
and each and everything has to be replicated. Okay, so DNA has this power, it can form an exact copy of itself so that it can be transferred to the other cell. Either that cell can be a gamete or that cell can be a somatic cell. जो कि नॉर्मल सेल डिवीज़न करते हैं उस टाइम पे भी डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है, और जब जब सेल को डिवाइड करके गैमेट बनाना होता है उस टाइम पे भी डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है. सो इन द सेंट्रल डोग्मा वी आर गोइंग टू स्टडी 3 प्रोसेसेस: replication, transcription and translation. So before starting with the DNA replication, next part will be the transcription. Let me give you some points related to the RNA. As we have studied about DNA, उसी तरह से RNA भी एक genetic material है, but वो सभी organisms के अंदर as a genetic material नहीं present होता, though RNA is also present in every cell of the organism, in all organisms, because it is a part of central dogma. But as a genetic material it is present only in some viruses, and these viruses are called riboviruses. ठीक है, तो RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. RNA is ribonucleic acid. It is a genetic material in some viruses, and these viruses are called riboviruses. Next point is, we are comparing this RNA with the DNA. If you will see, the RNA is made up of 3 things. जैसे कि DNA बना हुआ था पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप. इसमें जो पेंटोज शुगर है इट इज़ राइबोज शुगर. And if you will compare the structure of ribose sugar and deoxyribose sugar, you already know that ribose sugar has OH group at its second carbon. तो जो ribose sugar होता है उसके second carbon के ऊपर क्या होता है? OH group. ठीक है, means this is not free. This is the free functional group which is present in the ribose sugar in RNA. Nucleotides, you know that again purines and pyrimidines are there. Purines in this are adenine and guanosine, not thymine. इसके अंदर thymine नहीं होगा. And uracil and pyrimidines are uracil and cytosine. Clear? So they will pair up like this. Thymine will not be there. A will pair up with U and G will pair up with C. And phosphate group, as it is normally present in DNA, same is in the RNA. Now what does this free functional group denotes? As you know, the free functional group is there, so it can easily and very quickly reacts with other molecule. तो अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो वो बहुत इजीली दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है और हाइड्रोजन को. सो दैट इज़ वाई द RNA इज़ हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू DNA, क्योंकि DNA में ये so let's see the DNA replication, which is very important process, a very important topic for board exams also. So the process of formation of carbon copy of DNA is called DNA replication. Okay, it's carbon copy or replica. Carbon copy means exact same DNA is synthesized by DNA replication process. This is an autocatalytic process, means you know that DNA has 2 strands or 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. तो जो DNA की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड्स. ईच चेन इज कॉल्ड अ स्ट्रैंड. ओके, सो द DNA हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट इट्स ऑन स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट मीन्स एक वो उसको स्पेस प्रोवाइड करेगी, जगह प्रोवाइड करेगी जहाँ पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो सकती है. And this is an autocatalytic reaction, means DNA does not require external catalysts for this reaction. It autocatalyzes on replication reaction. ठीक है, so the 2 polynucleotide chains of the DNA are called strands and they act as template for the formation of new strand. Like for example, if I have this 2 polynucleotide chains of the DNA and each chain is called a strand, each chain will act as a template for the formation of new chain. These are the 2 templates and new strand will be formed over the previous strand. That is why it is called an autocatalytic reaction. Okay, so the strand itself act as a template and it does not require an external catalyst for this reaction. It occurs in the S phase of the cell cycle. So we will study the cell cycle in detail in 3rd unit.
where you will in the 11th class you have already studied about cell division, in which we have studied the different phases of cell cycle. So in the interphase stage there was G1S and G2 phase, and the first phase was G1S and G2 phase. In the S phase, when the chromosomes are in the extended form, that time the DNA replication takes place. क्योंकि जैसे जैसे वो M phase की तरफ जाते जाएंगे, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होते जाते हैं. Otherwise the chromosomes are most extended in the S phase where the DNA replication takes place. उस टाइम पे DNA पूरा stretched होता है, तो easily उसके ऊपर replication हो सकती है. Next is the semi-conservative nature of the DNA replication. This is very 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 important question for board exams. ये इस पे question आता ही आता है. What does it mean? The semi-conservative nature of DNA is, the first you have to write the definition. What does the semi-conservative means? A type of replication in which one strand of the DNA duplex is derived from the parent while the other strand is formed new. So what does it means? DNA duplex क्या होता है? सबसे पहले तो जो हमने DNA का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, द DNA डबल हेलिक्स, इट इज़ कॉल्ड DNA डुप्लेक्स. लेकिन जब DNA की रेप्लिकेशन होती है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वहाँ से ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. पहले तो ये हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, इनको हेलिक्स को खोलना पड़ेगा. अगर जैसे ये मेरे पास दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये पूरा एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हैं, तो उनको पहले अनकॉइल होना पड़ेगा, स्ट्रेट होना पड़ेगा, सो दैट न्यू स्ट्रैंड कैन बी फॉर्म्ड. ओके. So here I have used the term daughter helix. ठीक है. Duplex. This is called the duplex, means two strands together called the duplex. तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मीनिंग क्या है कि अगर एक DNA से दो DNA बन रहे हैं तो उसमें से हाफ पोर्शन जो DNA का है, न्यू DNA का, वो तो पेरेंट का होगा, पेरेंट DNA का, एंड हाफ पोर्शन विल बी न्यू. ओके. मीन्स इफ these are the two strands of the DNA. ये मैंने दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स या स्ट्रैंड्स बोल सकते हो आप. ये सेल के अंदर DNA प्रेजेंट है एंड दिस DNA हैज़ टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. सो ईच स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट. दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. ब्लैक वाली जो मैंने शो की है, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड और पेरेंट स्ट्रैंड, क्योंकि ये पेरेंट DNA है. दिस इज पेरेंट DNA. ओके. So each strand will act as a template for the formation of new strand. Here I have shown the red color strand which is a daughter strand. तो ये daughter strand है. तो एक DNA से दो DNA बन गए. These are two daughter duplex. Clear? Now this is called daughter duplex. This is one daughter duplex. This is second daughter duplex, which is formed from one single DNA. Now the red color one are called daughter strands. So here I have shown two DNA duplex which is called daughter duplex with the daughter strands. So other one is template और parent strand. तो एक daughter duplex के अंदर एक strand कौन सी है? Parent strand, and other strand is the daughter strand which is the new strand. This is called semi conservative nature of DNA. मतलब DNA की फॉर्मेशन के टाइम पे हाफ DNA पुराने वाला ही यूज़ होगा और हाफ DNA न्यू सिंथेसाइज होगा. ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि इससे दो DNA बनेंगे, एक पुराना पूरा का पूरा और एक सेकंड वाला पूरा का पूरा न्यू. इट इज़ नॉट लाइक दैट. Two DNAs will have half 50% of the parent strand and 50% of the new strand synthesized. This is called semi conservative nature of DNA replication. और इसको प्रूव करने के लिए कि DNA जो है इट शोज semi conservative nature of replication. Taylor et al. Was a scientist. Taylor with its other scientists, group of other scientists, he did one experiment to prove the semi-conservative nature of DNA replication. So let's see the experiment. So what he did in his experiment, when he started this experiment, he took nitrogen 15 isotope and grew E. coli in that nitrogen 15 containing media. So the DNA in the E. coli was that completely heavy DNA. Here I have shown the black color strand is representing nitrogen 15 isotope and red color strands are representing nitrogen 14 isotope, which is the lighter one. So जब उसने पहले नाइट्रोजन 15 वाले मीडिया में उसको ग्रो किया तो दोनों स्ट्रैंड्स थी उनके अंदर नाइट्रोजन 15 आइसोटॉप वाज प्रेजेंट. And how did he find out this? Because he collected the sample, he took out the DNA by centrifugation.
Centrifugation, as I already told you, in which in one experiment also I have shown you centrifugation. जब हमें किसी भी बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उसको सेपरेट आइसोलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स ऑल्सो. तो उसने क्या किया, जब नाइट्रोजन 15 मीडिया में उसको ग्रो किया तो उसने उसको पहले सेपरेट करके देखा तो वो कम्प्लीटली हैवी आइसोटोप उसको मिला. बिकॉज इट वॉज हैवी, दैट्स वाई इट वॉज कलेक्टेड कम्प्लीटली एट द बॉटम, क्योंकि हैवियर मॉलिक्यूल विल सेटल्ड एट द बॉटम एंड द लाइटर मॉलिक्यूल विल बी कलेक्टेड एट द टॉप. तो उसको जो डीएनए था वो सारा का सारा बॉटम पे मिला. तो उसको क्लियर हो गया कि जो डीएनए था वो कम्प्लीटली हैवी था बिकॉज ऑफ द हैवियर आइसोटॉप. उसके बाद उसने क्या किया, फिर से उसको नाइट्रोजन 14 वाले मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया. अगेन ही ट्रांसफर द इकोलाई हैविंग हैवी आइसोटॉप इनटू द नाइट्रोजन 14 मीडिया एंड ही kept it for 20 minutes. आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट जब उसने फर्स्ट जनरेशन को कैलकुलेट किया सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू तो उसने देखा कि उसको कम्प्लीटली हैवी नहीं मिला. ये जो डीएनए था वो थोड़ा सा ऊपर मिला. इट मीन्स दैट द डीएनए वॉज नॉट कम्प्लीटली हैवी, इट वॉज हाफ हैवी. क्योंकि क्या था, जो डीएनए की उसने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन में 2 डीएनए प्रोड्यूस हुए, डॉटर डीएनए, वन वॉज हैविंग नाइट्रोजन 15 स्ट्रैंड एंड द अदर वॉज हैविंग नाइट्रोजन 14 स्ट्रैंड. क्योंकि नाइट्रोजन 15 स्ट्रैंड जो थी वो पेरेंट स्ट्रैंड थी और नाइट्रोजन 14 जो थी वो न्यू स्ट्रैंड थी जो उसने नाइट्रोजन 14 आइसोटॉप को, नाइट्रोजन 14 को यूज़ करके, मीडिया को यूज़ करके बनाई थी. हाउ ही केम टू नो दीज थिंग्स व्हेन ही गॉट दिस मटेरियल एट एज हाफ हैवी. क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाली होती तो ये हमें बिल्कुल बॉटम पे मिलता मॉलिक्यूल. अगर दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 वाली होती तो हमें बिल्कुल टॉप पे मिलता. बट ही गॉट इट इन द समवेयर इन द मिडल. It means that the strand, one of the strand that was there in the first generation of the 2 daughter DNA, one was nitrogen 15 that was of the parent strand and one was nitrogen 14. उसने फिर से उसको कंफर्म करने के लिए अगेन नाइट्रोजन 14 वाले मीडिया में ही रखा और 40 मिनट्स के लिए उसको रख दिया. देन मीन्स 40 मिनट्स मीन्स अगेन 20 मिनट्स, स्टार्टिंग से 40 मिनट्स. ही गॉट 4 स्ट्रैंड्स बिकॉज 2 फ्रॉम हेयर 2 फ्रॉम हेयर. तब उसने देखा द फर्स्ट स्ट्रैंड ही गॉट इट एट द टॉप, सेकेंड स्ट्रैंड इन द मिडल, थर्ड डीएनए इन द मिडल एंड लास्ट वन एट द टॉप. ठीक है. सो ही फाउंड दैट इट मीन्स दैट इन दिस वॉज एक्टिंग एज अ पेरेंट स्ट्रैंड एंड न्यू स्ट्रैंड वॉज फॉर्म. न्यू स्ट्रैंड तो नाइट्रोजन 14 की ही फॉर्म होनी थी क्योंकि हमने उसको नाइट्रोजन 14 प्रोवाइड किया था. This strand was acting as a parent strand and new strand was formed that was of nitrogen 14. This strand was acting as a parent strand and new strand was formed nitrogen 14 and this strand again was acting as a parent strand to form the new strand that was again of nitrogen 14. He got all this information, all this conclusion because of this collection of the after centrifugation. First में उसको completely light मिला क्योंकि एक स्ट्रैंड जो थी पेरेंट वाली वो भी नाइट्रोजन 14 थी और जो उसने मीडिया प्रोवाइड किया था दैट वाज आल्सो नाइट्रोजन 14. ही गॉट बोथ द स्ट्रैंड्स नाइट्रोजन 14. सेकंड में हाफ हैवी बिकॉज वन स्ट्रैंड वाज द पेरेंट स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 एंड द न्यू स्ट्रैंड वाज अगेन न्यू नाइट्रोजन 14. इन द थर्ड सेम केस, फोर्थ सेम केस. ओके, सो ही गॉट द रेशियो 1:2:1. One was the completely light, it was also completely light and this was completely hybrid. Sorry, 2:2. One was completely light and this was hybrid. You can also call it as hybrid because it contains one strand nitrogen 14 and other strand nitrogen 15. So with this he got the conclusion that they proved that DNA replication is a semi-conservative type of replication. So let's see one video on this, then you will be more clear over this. Crack this mystery. 2 geneticists, Matthew Meselson and Franklin Stahl, carried out an experiment around 1958. They used a heavy isotope of nitrogen and inserted it in the DNA of the bacterium Escherichia coli. They obtained several generations of E. coli and analyzed each for the presence of DNA. The results help them understand that the replication of DNA in E. coli is indeed semi-conservative.
This is how DNA replication takes place in almost all organisms. Now let me introduce you to one more interesting term. It's called the central dogma. Ever heard of this? Well, it's an important term and an equally interesting concept in biology. The central dogma in molecular biology is used to explain the flow of genetic information. And what does that mean? We all know that DNA governs life. But any idea how this mechanism works? Let's understand this with the help of the central dogma. In a cell, the DNA from the nucleus replicates to make a copy of itself. This is that we're aware of. And do we know what the functional segment of DNA is? It's a gene. It's the segment of DNA that codes for a particular character. The part of DNA which acts as a gene gets copied in the form of a single strand. This is called mRNA. This mRNA, that is the messenger RNA to be precise, is a single strand copy of the DNA. It comes out of the nucleus in the cytoplasm and then is worked upon by the special machinery of enzymes. The enzyme machinery reads the code hidden in the mRNA and synthesizes proteins accordingly. This complete process of mRNA synthesis from the DNA, followed by the synthesis of proteins from the mRNA, is called as central dogma. In other words, the simplest process by which proteins are synthesized from the code of the DNA molecule is the central dogma of life. This is how it's usually summarized. Did you know that these two steps have a scientific name? The process in which the mRNA is synthesized from the DNA strand is called transcription. And the process in which proteins are synthesized from the code of mRNA is called translation. Would you want to know more about these? Watson and Crick had a hypothesis that the DNA replication was semi-conservative. However, there was no experimental evidence to test this hypothesis. So, to test this hypothesis, Meselson and Stahl in the year 1958 designed a wonderful experiment. Now, the word semi-conservative means each of the strand is going to act as a template for the synthesis of new strand. And to prove if this phenomenon is true or not, we must have a method to distinguish between the parent strand and the daughter strand. Yes, distinguish between parent strand and daughter strand. So here is what Meselson and Stahl did. They took E. coli wild-type cells and grew them in media containing N15 for several generations. N15 is a non-radioactive heavy isotope of nitrogen. The presence of N15 will make all the molecules in the cells, including the DNA, heavy. What does it mean by heavy DNA? It simply means if I take E. coli cells grown in N15 media and subject its DNA to density gradient centrifugation, then the density of this DNA will be more than the density of the DNA taken from cells grown on N14 media. The cells grown in N15 media were collected and transferred in fresh N14 media. So as the cells divide, they incorporate N14, which is the normal isotope, into its DNA. The cells were harvested every 20 minutes and the DNA was isolated and subjected to density gradient centrifugation. Let's take a look at the results. The presence of only intermediate band after the first generation indicates that the heavy strand was acting as a template for the synthesis of new strand with N14 isotope. As the cells divide further, more and more N14 is incorporated into its DNA.
These results indicates that the replication of DNA is semi-conservative.